Hello everyone, welcome to our channel. Today we'll discuss about one of the most important papers in the teacher education programs and also the masters in education programs in any universities, any institutions in India. And the paper is the educational guidance and counseling. Before we'll discuss about the meaning of educational guidance and counseling and to understand the guidance, we have to understand the importance of the guidance, or we want to know that what exactly guidance should do and why we are focusing on the guidance program, because this is one of the paper which is not only theoretically important but also the practically most important paper in any teachers training institution. Friends, in today's pandemic situations, we are facing lots of social, psychological, emotional, and economical problem. Apart from that, in modern education, great emphasis is given to the guidance and the counseling because one of the purpose of education is to help the individual in becoming a useful member of the society and to be economically productive. If an individual receives education without proper guidance and counseling, he is not be able to develop his personality fully and thus is unable to serve his society in terms of his ability and talent. मानव समाज रे आमे जो बसबास करूछे निजको गोटे मनीष निजको गोटे जदि सुपीरियर किंबा गोटे फ्रुटफुल इंडिविजुअल हिसाब रे जदि से गणना करने को चाहे ताहेले एजुकेशंस गाइडेंस एंड काउंसलिंग रो बहुत गुडी इंपोर्टेंस अच्छी कहीं ना गाइडेंस एंड काउंसलिंग आमको हेल्प करे निजर पर्सनालिटी की फुल एक्सटेंड यूटिलाइज पाई एवं निजर एबिलिटी एवं टैलेंट को यूटिलाइजेशन पाई. If you remember the Vygotsky zone of proximal development, an individuals can achieve his full potential with the support of an experienced and a trained persons. And the zone of proximal development is talking about that. So guidance is not only based on some principle but based on some theoretical and hypothetical situations and the practical examples. So let's start what exact guidance is. We will talk about the guidance. It means to direct and to point out and to show the path. गोटे मनीष को गोटे डायरेक्शन दिग्दर्शन पाई ताको आइडेंटिफाई करबा पाई गोटे मार्गदर्शन पाई लिटरली रे आमे ताको कहूची नॉर्मली आमे ताको गाइडेंस बोली कहूची बिकॉज इट इज असिस्ट और रेंडरिंग ए सर्विस by more experienced persons to a less experienced persons to solve certain major problems of the individual that may be related to educational, vocational and personals. गोटे एक्सपीरियंस पर्सन द्वारा बा एक्सपर्ट्स बा ट्रेन पर्सन द्वारा गोटे इनएक्सपीरियंस पर्सन को सर्टेन प्रोब्लेमेटिक एरिया रे जेतेबेले आमे असिस्टेंस बा सर्विस दे थाउ ताकू आमे साधारणतः गाइडेंस भाबरे कहिता. सो गाइडेंस इज ए कांसेप्ट और एज वेल एज ए प्रोसेस. एज ए कांसेप्ट आमे ताकू कोन कहिबा गाइडेंस इज कांसेप्ट एंड इट इज कंसर्न विथ द ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. गोटे मनीषर मैक्सिमम बा ऑप्टिमल डेवलपमेंट पाई विकास पाई गाइडेंस रो होची गुरुत्वपूर्ण. एज ए प्रोसेस गाइडेंस हेल्प एन इंडिविजुअल टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वन स्ट्रेंथ लिमिटेशंस एंड अदर रिसोर्सेस. आमे पढ़ी जे सेल्फ डेवलपमेंट आमे जानी इंडिविजुअल्स सेल्फ डेवलपमेंट पाई निज स्ट्रेंथ वीकनेस लिमिटेशंस को बुझिबा पाई गाइडेंस रो मध्ये इंपोर्टेंस अछि. एंड ऑल्सो इन सेल्फ डायरेक्शंस दैट मीन्स एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स मेक चॉइसेस एंड डिसीजन ऑफ इट्स ओन. कौन सी इंडिविजुअल रो ताको गोटे दिग्दर्शन देवा पाई गाइडेंस को आमे कॉन्सेप्ट किमा गोटे प्रोसेस हिसाब रे नै थाउ. जेते बेले कॉन्सेप्ट कहा जाउची मानव समाज रो बा गोटे इंडिविजुअल रो व्यक्ति विशेष रो तार ऑप्टिमल डेवलपमेंट पाई आमे ताको कॉन्सेप्ट हिसाब रे नउची.
एवं निजको बुझापी गोटे मनीष निजको बुझापी गोटे सेल्फ डायरेक्शन देवाई जो गाइडेंसटा यूज होमें प्रोसेस बोली कही। तो आम जब देखा लीफ फीवर होती जड़े एजुकेशनिस्ट अकॉर्डिंग टू हिम you will go to the definitions. Guidance is that systematic and organized phase of educational process which helps the youth in his power to give point out and direction to his own life to the end that he may gain richer experienced persons while making his unique contributions to our democratic society. That means Lee Fevers is saying that गोटे मनीषर तार सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज वे रे तार ओन पावर एंड पोटेंशियल को यूटिलाइज करने तार जीवन में जहाँकि गोटे एक्सपीरियंस पर्सन्स द्वारा गाइडेड हो जाफल कि से सोसाइटी को गोटे डेमोक्रेटिक वे गणतांत्रिक माध्यम गोटे यूनिक कंट्रीब्यूशंस करें आम गाइडेंस कही। Another definition has been given by the Crow and Crow. According to the Crow and Crow, guidance is assistance made available by personally qualified and adequately trained persons to an individual of any age to help him manage his own life activities, develop his own point of view, and make his own decisions and carry out his own burden. माने गोटे मनीष को से सामर्थ्य कराए गाइडेड पर्सन द्वारा जे क्वालिफाइड एंड एडिक्वेट ट्रेन पर्सन्स जहाँकि से निजर व्यक्तित्व को बुझीपर निजर ओन लाइफ को मैनेज करें डिसीजन्सटा ओन निजस्व भाव में नहीं पार और निजर जीवन जो बर्डनटा अच्छी ताकू से मध्य कैरी आउट करा होची गाइडेंस। सो दिस इज द डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय ली फीवर एंड द क्रू एंड क्रू। When we are talking about the guidance in the field of education's sphere, educations and guidance, these are two essential elements. How these educations, guidance and counseling are correlated? Both the terms, both guidance and the counseling, have loosely or interchangeably used. ताकू आम इंटरचेंजेबली गाइडेंस जगह काउंसलिंग, काउंसलिंग जगह गाइडेंस आम यूज करुच्छे। बट गाइडेंस is a broader terms and counseling is a part of the guidance. It includes, that means the guidance includes the counseling as one of the service. Then for logical separation दृष्टि आम देखा Butters, he makes an logical separation between guidance and counseling. According to him, there are two phases of individuals in the counseling process. One is adjustive and second is the distributive. In the adjustive phase, what happens? The emphasis has been given on social, personal and emotional problem of individual. And in distributive phase, or we can say that distributive phase, the focus has been given on educational, vocational and occupational problem. तो आम जो एडजस्टिव फेज कहूँ एडजस्टमेंट जहाँ कहूँ नॉर्मली इंडिविजुअल्स are stress with the social, personal and emotional problem. आ गोटे दिग हूँ जोटा कि डिस्ट्रीब्यूटिव फेज ताकू कहूँ आम एजुकेशनल, वोकेशनल एंड ऑक्युपेशनल प्रॉब्लम। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव फेज को आम कहूँ जोटा रिलेटेड टू एजुकेशनल, वोकेशनल एंड ऑक्युपेशनल प्रॉब्लम्स, दैट इज डिस्क्राइब एज ए गाइडेंस। व्हेयरएज जो एडजस्टमेंट फेज गुड़ाक रोचे सोशल, पर्सनल एंड इमोशनल प्रोब्लेम गुड़ाक ताकू आम काउंसलिंग भाव में आम विहित बा नामित करता। दैट मीन्स ऑल द सोशल, पर्सनल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जिते बेले गाइडेड वे आम करा जाए ताकू आम कौन कहूँ काउंसलिंग कहा जाउछि। किंतु जिते बेले एजुकेशनल, वोकेशनल एंड ऑक्युपेशनल प्रॉब्लम को आम नौछि से जिनस को आम कहूँ normally guidance. So this is broad distinguish between guidance and counseling. तो subsequent classes रे भी आम डिस्कसन करिबा गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिटेल डिस्क्रिप्ट तार भितर डिफरेंशिएशंस कौन अच्छी।
तो ये हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस. Let's discuss about its importance, need and importance of the guidance. The guidance is needed wherever there is a problem. जो जगह problem अच्छी से जगह guidance दरकार. The need and importance of the guidance are as follow. तो broadly कहीं की आम गाइडेंस साहाय्य नहीं था तार गोटे इम्पोर्टेंस अच्छी. फर्स्ट थिंग इज टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ डायरेक्शन. गाइडेंस हेल्प करे टू अंडरस्टैंड वन स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट. जो इंडिविजुअल्स बा व्यक्ति विशेष तार स्ट्रेंथ वीकनेस को तार थ्रेट कौन अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन अच्छी ताकू बुझापी फॉर द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड द सेल्फ एंड गिव द डायरेक्शन अकॉर्डिंगली. Guidance has the great importance. So it helps an individuals to develop his ability to solve his problem and take appropriate decisions based on his own self-understanding and self-direction. The second one is that optimum development of individuals. Every individual born with certain qualities, certain abilities, and development of those capacities and talent is important. And guidance helps the individuals to identify, to recognize, to develop those talent, those abilities, and utilize for the development of the society, development of his own. The third thing, solving different problems of individuals. संघर्ष हेउछि मानव समाज रो व्यक्ति विशेष रो गोटे प्रत्यक्ष व परोक्ष अंग कहले अच्युक्ति हेब नाही. एन इंटेग्रल और अभिन्न अंग आम कहूँ. सेमती कौन से मनीष ना जी कि तार जीवन भितर बा लाइफ टाइम भितर कौन से प्रोब्लेम रो सम्मुखीन होई ना. तो व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम्स द गाइडेंस हेल्प्स टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. दैट मीन्स एन एक्सपीरियंस पर्सन हु हैव सम एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स. नॉर्मली the person guide and inexperienced persons to solve this problem. Next one is academic growth and development. In academic atmosphere also, we need the career development. Career path should be very precisely defined. Selection of careers should be important. The career strategy should be also defined very carefully. So guidance helps an individuals to develop himself or herself academically. That means when a guided or experienced persons or faculty support the students, it will be more easier for the students to develop in a career path. Next is vocational maturity, vocational choice and vocational adjustment. This is one of the important features in guidance program because selections of career is one of the मेजर चैलेंजेस टुडे. आज समाज रे गोटे एप्रोप्रिएट कैरियर पाथ को चूज करबा होची सबुथरे डिफिकल्ट ड्यू टू वेरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वेरियस इंफॉर्मेशन deficiencies in our life, and moreover the pressure of the parents and pressure of the neighbor. सेति पई आमे बहुत टाइम गण हो वोकेशनल मैच्योरिटी को आमे ध्यान दो. वोकेशनल चॉइस रे भी प्रॉब्लम फेस करू. तो से आमर कौन हुए गाइडेंस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज स्ट्रेंथ. नेक्स्ट वन इज सोशल पर्सनल एडजस्टमेंट. लाइफ रे पर्सनल एंड सोशल पर्सनल एडजस्टमेंट पाई बहुत गुड़े आम सोसाइटल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स फेस करि थाउ, जहाँ फल कि गाइडेंस विल हेल्प अस टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. द पर्सन्स will directly help the what you can say the students to identify his problems and find out the ways and means to solve this problem. Better family life. In today's context, work-life balance is one of the important problem today. Work-life balance, family life को balance करवा पाई to give maximum time to the quality of time to the family, that is important. तो गाइडेंस प्रोग्राम हेल्प करे से गाइडेंस प्रोग्राम आवश्यकता रही गोटे फैमिली लाइफ को बेटर वे रे बुझापी अतिवाहित करने. एंड द सिटीजनशिप. If we consider the today national policy on education, one of the important objective
of National Education Policies 2020 is to develop good citizenships. गोटे भल नागरिक बा क्वालिटी नागरिक हेबार गोटे मुख्य उद्देश्य. सो गाइडेंस सेटा को हेल्प करे गोटे क्वालिटी सिटीजन्स डेवलप करे पाई, टू डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप पाई, टू डेमोक्रेटिक थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस पाई, टू एडप्ट फेलो फीलिंग्स, टॉलरेंस, कोऑपरेशंस, लव, एफेक्शन इन द सोसाइटी, फॉर कंजर्वेशंस एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस. आगु जो डिस्कसन करथिले प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस केमती ही पारिबो जदि आमे तार टैलेंट एबिलिटी को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करि पारुछि. सो इट हेल्प्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. जार जो एबिलिटी वाइज ही ताकू प्लेस करबा को पड़िबो. जदि आमे गोटे बाघ, गोटे साप और गोटे मांकड़ को कहबा तीन जन को तुमे गच्छ चढ़ बोलिकी गच्छ चढ़िबा पई, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम. So you have to identify appropriate abilities and their skills and allot them appropriate jobs so that the maximum talents can be utilized and objective can be ascertained. And last importance or need of educational guidance or counseling is talking about for the national development. National development is utmost priority. राष्ट्र सर्वोपरि आपण माने सुनुथुबे सब जगह. राष्ट्रहित होउची मनुष्यर गोटे लक्ष्य. तेणु नेशनल डेवलपमेंट पाई टू बिकम्स एन प्रोडक्टिव मैन पावर हु कैन डेवलप द सोसाइटी इकोनॉमिकली इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. सो गाइडेंस प्रोग्राम हेल्प करे तो नेशनल वैल्यूज को इनकलकेट करबा पाई टू बिकम ए ट्रू पेट्रियोटिक in the society. So guidance is helpful not only for the students but the teachers in educational institutions, but also it is helpful for the parents, administrator, planner and committee members. The guidance programs not only student teachers को help करे, यह व्यतीत parents, administrators, planner and committee members को help करे. तो यही थिला आजिर विषय वस्तु, the concept, definition of guidance and importance of guidance. जदि वीडियोटी भल लगिला ताकू लाइक करंतु, सांग मानक सहित सब्सक्राइब, सांग मानक सहित शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहाँ फल कि सब्सिक्वेंट वीडियोस आम कंटिन्यूअसली दीटा पेपर एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग्स इन अ मोस्ट एप्रोप्रिएट वे रिप्रेजेंट करने चेष्टा करूँ. थैंक यू.